The 11th one is 10% of the bolts produced in a certain factory turn out to be defective. 10% are defective. इसका मतलब हमारा P क्या हो गया? That's a 10%. 10% is like 10 by 100, which is 0.1. P is given as 0.1 here. N की वैल्यू आपके पास 10 है यहाँ पे. Lambda की वैल्यू N into P हो जाएगी. That's 10 into 0.1. So this is 1. Exactly 2. That is x is equal to 2 पे निकलेगा. So it is 1 का square e to the power minus 1 and a 2 factorial is there. So it would be 0.184, putting all of the values. Then they are saying कि more than 2 volts will be defected. उसके अंदर क्या होगा? x is greater than 2. तो मतलब 2 वाली वैल्यू भी हटानी पड़ेगी, 0 वाली भी हटानी पड़ेगी, 1 वाली भी हटानी पड़ेगी फ्रॉम द वैल्यूज 1, क्योंकि टोटल वैल्यू हमारे पास क्या रहने वाली है? प्रोबेबिलिटी वुड बी 1 इन दिस. इट्स P2. तीनों वैल्यूज हमारी टोटल होंगी और किस में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? फ्रॉम 1. सो आई वुड हैव 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा रहेगा यहाँ पे, and then lambda e to the power minus lambda divided by 1 factorial. लास्ट में हमारे पास lambda square is there, e to the power minus lambda is there, 2 factorial is there. अब इसमें से जो भी वैल्यूज हमारी कॉमन आ सकती है, दैट आई वुड टेक आउट कॉमन. e to the power minus lambda हो गया, 1 is there, plus lambda is there, plus lambda square by 2 factorial would be there. That's 2 only. अब बस हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट इन करनी है. That is e to the power minus 1, and then we have 1 plus 1, 1 over 2 is there, 2 plus half is there, 2 plus half is 5 by 2, 1 as it is, e to the power minus 1 is there, so that's 0.368, and then multiplied it with 5 by 2, and just multiply it and divide it, and then subtract it from 1, you would get the resultant as 0.08.